shells, a circular cylindrical shell loaded, a circular cylindrical shell loaded symmetrically with respect to its axis. A circular cylindrical shell loaded symmetrically with respect to its axis.
फिगर हो गया क्या ड्रॉ? Yes, sir. ऑल कुछ रहा है? कुणाल लेट आया अभी। Okay. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। डी थीटा cylindrical boiler subjected to, this may be the example of cylindrical boiler subjected to uniform steam pressure from inside. Cylindrical boiler subjected to uniform steam pressure from inside. May be a vertical oil cylinder, it may be a vertical oil cylinder. Also you can take the example of gas cylinder, our domestic gas cylinder. लिख रहे हैं? Yes, sir. You have to write. This is the general theory of cylindrical shell. Then it is the example of circular cylindrical shell loaded symmetrically with respect to its axis, and the example may be a boiler subjected to uniform steam pressure, may be a vertical oil cylinder, may be a gas cylinder. Membrane shearing force Nx theta is equal to N theta x. Membrane shearing force Nx theta is equal to N theta x vanishes in this case. And force N theta constant along the circumference. N theta is constant along the you make it theta everywhere. क्या लिखा? Along the circumference.
Moment acting are shown in the figure. Moments actings are shown in the figure. Also twisting moment mx theta, twisting moment mx theta is equal to m theta x is vanishes due to symmetry. These are vanishes due to symmetry. Now consider three equations of equilibrium. Consider three equations of equilibrium along x and z axis, along x and z axis, and taking moment about y axis. Taking moment about y axis. In this triangle, F resolve this force, and this is the n theta is the per unit length. So, total is n theta into dx. So, F upon n theta dx क्या होगा? In this triangle, f upon n theta dx. Kunal, Yes, sir. Cos theta. in this triangle, हाँ? Cos d theta. अभिजीत Yes, sir. क्या होगा? प्रदीप, Sir, cos d theta. रणवीर सर, सोच रहा हूँ सर. सोचना क्या है? साइन कॉस टेन, बस इतना ही बताना है. तो cos का जो n theta है तो वो सर n theta dx अपन वो cos theta होगा ना, cos d theta. गलत. 90 माइनस होगा सर, 90 माइनस थीटा. नहीं नहीं, 90 की जरूरत ही नहीं है. दिस इज द एफ, opposite is the perpendicular, and this is the n theta. So, this is the hypotenuse. So, perpendicular upon it is sine. Why you are, this is the base, na? Making the angle is the base, opposite is the perpendicular. So, why everybody is talking about the cos theta? Understood? Huh? Agree or not?
F is the vertical, this is, and this is the force n theta x. So, perpendicular upon hypotenuse is the sin theta, not the cos theta. आया कि नहीं? अभी भी हाँ नहीं बोल रहे प्रदीप? एनी कंफ्यूजन? तो डी थीटा कौन सा इसमें ये क्या बताया? ये लिखा है ना हमने, ये क्या लिखा है यहाँ? लिखा हुआ है ऑलरेडी। एन थीटा और एफ के बीच का एंगल है डी थीटा। Yes. If theta is very, very small, then sin theta is 0. It is not 0. Sin 0 is not d theta. So, f is equal to n theta dx d theta. Yes, sir. Now, along the x axis equilibrium. If you take that direction is minus, then nx total force, this total force acting on this side, what is the value of the force? Nx into r d theta. Radius of yes r d theta This one. yes, sir. There are two forces only in the x direction. yes तो क्या बचा? so nx r d theta कैंसिल हो जाएगा dnx dx r dx d theta Equation 1. Now, along the z direction, equilibrium along the x direction. If the z is the external force on the top, so fill in the blanks. sir dx into r r d theta How? sir area surface r So area. So one side is the dx, yes sir dx, d theta and this is the another side is the 1. Yes, r d theta.
r d theta. F we already found. F, this is, put the value. क्या मिला? तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा. नहीं कैंसल नहीं हो रहा ना, डी थीटा डी एक्स सब दूर नहीं आ रहा है. ओके डी एक्स डी थीटा आ रहा है, कैंसल आ रहा है. जेड के साथ आर कुछ आर डिवाइड कर लो. आर डिवाइड कर दिया ना. Now movement about the y axis. मूवमेंट समझ में आया क्या? Yes, sir. This is the y. Explain everybody to everybody. You explain the movement. The moment mx into distance Length, r not distance. It is the length. Yes, sir. Mx acting on this side, so into length. Then mx plus this one again side. Plus d, yes, sir. Then Into 4 force the third one. third one q is shear force into length into r. Into R, sir, r into d theta. R d theta is Particular distance dx. into distance dx. We neglect the small quantity of this. So qx and qx, this make a couple.
multiply with the length and the distance, it make a couple generate. Okay? Yes, sir. So finally what you will get? The third equation. You give me the third equation. MS RT थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा MS R d theta common theta R d theta और dx भी कॉमन है तो सर d mx अपॉन dx माइनस q RT थीटा कॉमन कॉमन R d theta R x कॉमन है से यही आ गया ये मैं सब है ना So you equation 1, equation 2, equation 3. अरे 1 चली गई. so dmx upon dx और dx थीटा into dx निकला है Now write down, if we consider displacement of the point, if we consider displacement of the points in the middle surface of the shells from symmetry, so middle जो आ रहा है the middle huh? point in the middle If we consider displacements of the points in the middle surface of the shell from symmetry, there are three components na for this u, v and w. Displacement, there are three components of the displacement u, v and w. yes So from symmetry, component v of the displacement, component v, small v of the displacement in circumferential direction vanishes. In circumference direction vanishes. We consider only displacement u and w. We consider only component u and w in the x and z direction. In the x and z direction. Therefore, strain component in terms of u, v, w, who will tell me u, v, w, v is not there. ex del upon del x The first page of our lecture, the first equation. yes sir del upon del x और mu भी तो आएगा उसमें minus mu into del y upon e ये है इसमें del upon del x तो उसमें है सिग्मा के टर्म्स सिग्मा के सिग्मा के टर्म्स
इसमें एप्सिलॉन थीटा लिखा हुआ है, एप्सिलॉन थीटा इक्वल्स टू माइनस w अपॉन r, E theta, ये displacement E theta. Now, who will give me the equation number 2? Equation number 2, sigma x equals E x upon 1 minus m square. yes equal to d square w upon x square. Vh cube. Actual. Equation 1, na? ये इक्वेशन 2, equation 2. इक्वेशन 3 है, 4 होगी, 3 होगी, हाँ, ओके. 3 है, yes d equals M equals to होता है. इक्वेशन 2 ही है वो. हाँ 2 years. नाउ इक्वेशन 4. सिंपल है ना ये तो, स्ट्रेन वाली. ये 2 डायरेक्शन में लग रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय द पॉइजन्स रेशियो, दैट्स ऑल. नाउ इक्वेशन 4 फॉर द m मूवमेंट. इक्वेशन 4 नहीं है. so माइनस d ये है सर इक्वेशन 4. Now, instead of sigma x, we can use nx. Ex E theta, simple. yes And x equals. Agree? yes Can you put the value of Ex and E theta? Again agree? yes Yes, sir. Effect and the another one is कुणाल, समझ में आ रहा है? अभी अभिजीत, yes sir आ रहा है समझ में? yes वैल्यू रखा अभी अपन ने. Equation 1 shows
equation 1 shows Nx is 0. इक्वेशन 1 कहाँ गई? कुछ गलत लिखी है क्या इक्वेशन 1 मैंने? इट इज मल्टीप्लीकेशन है, नॉट हाँ, दिस इज यस. Nx constant and effect of Nx on the bending can be neglected. Effect of Nx on the bending can be neglected. So, if you will make it 0, what you will get from this? Nx is equal to EH 1 minus V square du upon du upon dx. What is the value of du upon dx? वैसे वर्टिकल कोई फोर्स लगेगा क्या? सिलेंडर है एक, क्यों? एक सिलेंडर या स्टीम का वो है अंदर से, तो वर्टिकल उसमें कोई फोर्स लगेगा? ऐसे लगेंगे ना सब, इन द सर्कमफेरेंस डायरेक्शन, आल्सो इन द रेडियल डायरेक्शन. ड्यू टू द हुप स्ट्रेस द वर्टिकली आई थिंक नो फोर्स विल बी देयर. क्या बोलते हो राठौड़? लगेगा सर, इसमें तो प्रेशर इनटू एरिया वर्टिकल लगेगा, वर्टिकल. और क्या सर, अंदर अगर प्रेशर है जैसे बॉटल ही आपका है तो बॉटम पे भी जाएगा सर, ऊपर ढक्कन की तरफ जाएगा. इस पे जाएगा क्या ऐसा वर्टिकल फोर्स? हुक में ही लगेगा सर. यहाँ लगेगा बॉटम पे, यहाँ लगेगा क्या? वो छोटा होगा सर. ज्यादा होती है हुक स्ट्रेस बॉटम पे लगेगा तो वो तो फिर वॉल पे भी जाएगा, ट्रांसफर होगा, बट वो इसकी वैल्यू वही कम हो. वो तो रखा हुआ है जमीन पे. प्रेशर तो हर डायरेक्शन में सेम होगा सर. Anyway, so you make the Nx is equal to 0, you will get du upon dx, you put it in the second equation. And give me the value of n theta. EH W R with sign तो नेगेटिव साइन. एक क्या रह गया? WH E. कंसीडर बेंडिंग मूवमेंट. सबको आ गया क्या ये? एवरीबडी गॉट इट? एन थीटा इज इक्वल टू ई डब्ल्यू एच अपॉन आर.
सर तो आया कि नहीं आया? एक मिनट कर लो, कर लीजिए उसको अभी। वो एनएक्स को 0 रख देंगे तो डेली अपन डायरेक्ट वहीं से निकाल देंगे न्यू कैंसिल। हाँ वहाँ से आ जाएगा सर ये न्यू डब्ल्यू अपन आर हाँ डब्ल्यू अपन डब्ल्यू आ गया। Now put the value of qx in equation second. From third you put the value of qx equation number 3. Put the value of qx in equation number 2. क्या आया भाई? प्लस एन थीटा अपन आर इक्वल माइनस रणबीर सर क्या आया? सर इक्वेशन 3 क्या है फिर? गुना डी बाई डी क्यू प्लस 1 अपॉन आर। क्या आया? डेल स्क्वायर एम एक्स अपॉन डी स्क्वायर एम एक्स अपॉन डी स्क्वायर Now put the value of mx. Equation 4. And n theta भी निकाला था, n थीटा निकाला था क्या अपन ने, और mx भी है अपने पास। माइनस डी 4 डब्ल्यू अपॉन डी एक्स 4 n थीटा क्या है? माइनस ई डब्ल्यू अपॉन आर डब्ल्यूएच अपॉन आर is equal to z minus z. Everywhere there is a minus. प्लस Here is the minus, here is the minus, here is the minus. यस This is equation number 273. क्या मिला फाइनली? ओ रहेगा सर डी 4 डब्ल्यू डी एक्स 4 This is equation 274. If
beta 4 is this. Give me the equation in terms of beta 4. This is 275, 274. Now give me 276. Four beta 4 d upon w. D for w upon dx is 4 plus 4 beta 4 divided by w equals to z by d. तो w नहीं आएगा हाँ W भी आएगा. dy को अभिजीत. आगे सर. रणवीर सर. ईएल सर आ गया सर. कुणाल. यस सर. जूम करिए जरा. कल बताया था मैंने वैसे क्वेश्चन नंबर 7 द सेम. yes sir वी प्रूव दिस ना. यस सर. यस सर. सो विल यू डू इट इन द एग्जाम. समझ में आ गया. 12 नंबर का 12 का आएगा तो कर देंगे. बारह में आएगा आ गया कि नहीं समझ में, ये बताओ. yes sir आ गया सर d for w upon dx plus 4 beta equation 40. Now let us come to the membrane theory. A small derivation for the membrane theory. करना है कि नहीं करना है. करना सर. एक 12 का और हो जाएगा. एक एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ना उस डेली. मनता कहता है 12 के 5. This was the general theory. Now the membrane theory.
In the book, this was page number 466. Have you drawn? हो गया So ये heading क्या है topic की है? Membrane theory of cylindrical shell. Membrane theory of the cylindrical shell, and previous was the general theory. Consider a cylindrical shell we assume
The generator of the shell is horizontal. Generator of the shell is horizontal and parallel to x axis. Generator of the shell is horizontal and parallel to the x axis. An element is cut from the shell. An element is cut from the shell by two adjacent generators. Two adjacent generator. This is the generator. These are the generators. So, two adjacent generator and two perpendicular and two cross sections perpendicular to the x axis and two cross section perpendicular to x axis. And its position defined by coordinate x and angle phi, psi, whatever, and its position is defined by the coordinate x and angle phi. The forces acting on the sides of the elements are shown in the figure. The forces acting x, y, z are the three directions. लिखा इतना क्या लिखा? What you have written? Read somebody. Force acting on the sides are shown in figure. No, from the beginning. Consider a cylindrical shell. No, with the title also. Title you also read the title. Membrane theory of cylindrical shell. Then after that. किसी ने generator of shell is horizontal parallel to x axis. An element is cut from the shell by two adjacent generators. And two cross sections perpendicular to the x axis. And two cross sections perpendicular to x axis, and its position is defined by coordinate x and angle phi. The forces acting on the sides of the elements are shown in the figure. In addition, a load will be distributed. Over the surface of the element. A load will be distributed over the surface of the element. The component of the intensity of this load, being denoted by capital X, capital Y and capital Z. If some force is acting on the surface, its component in the x direction is capital X, y direction is y and z direction is the capital Z. Now consider the equilibrium of the element in the x direction. Consider the equilibrium of the element in the x direction. Who will give me the equation A? Equilibrium in the x direction. इनके कंपोनेंट्स हो जाएंगे सर nx है nx के साथ और nx थीटा नहीं सी कंपोनेंट क्या होगा एक साइड से x मतलब x सेम रहेगा x तो
क्या इक्वेशन आएगी? इक्वेशन क्या आएगी? माइनस एन एक्स डी आर इंटू थीटा, सॉरी आर इंटू डी थीटा, तो एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन आएगी डी एन एक्स डी एक्स आर डी आर। नहीं ये भी तो है 90 से वाला। अरे हाँ शेयर, हाँ शेयर भी तो लगता है ना। हाँ प्रदीप को थोड़ा याद दिलाना पड़ता है, हनुमान जी जैसा कि। हाँ सर पावर बहुत। हाँ, पर याद दिलाना पड़ता है इसको कि अरे ये भी तो था उसमें। सर ध्यान लीजिए सर। और भाई तो थोड़े से ध्यान से 10 नंबर चले जाते करके में नहीं जाता, करके में 2 जाते। Agree? The external force is x in the x direction component. Multiply by the area. Area is r d theta d phi into dx. ठीक है। ठीक है. Now give me in the y direction. Now give me the equation in the y direction. हाँ वही में एन थीटा आ जाएगा सर, एन थीटा एन दोनों। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, इक्वेशन ए कुछ हो जाएगा, कुछ कटाकटी हो रही क्या? आर डी थीटा डी एक्स। और x को उधर ले जाओ, हाँ तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ फाइनली? What about the y direction? एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा है इसको, पहले एक स्टेप आएगी तुम्हारी दिस माइनस दिस। हाँ ये कैंसिल होगा, ये एक स्टेप लिखना है तुमको। इसमें भी लिखना थी शायद क्या? हाँ उसमें भी एक स्टेप लिखना है आपको, इसमें भी एक स्टेप लिखना है, देन सेकंड स्टेप। इक्वेशन बी क्या बचा? ये कॉमन आ जाएगा आर डी थीटा डी एक्स।
What about the z direction? Z में तो सर 0 होगा. तो Y में वही Z होगा. y तो इधर है और z तो इधर है, इसका कंपोनेंट आ सकता है, जैसे अपन ने निकाला था वहाँ पे, अभी निकाला था इसका कंपोनेंट लास्ट लेक्चर में, लास्ट अभी इन द सेम लेक्चर, कंपोनेंट ऑफ दिस. हाँ सर. Yes, yes. और z भी है ही वहाँ, कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल लोड इज देयर. These three equation are 270, equation number 270 in the x, y, z, for the x, y, z, x, y, z. Yes, 270. In each particular case, in each particular case, we readily find the value of n phi. Find the value of n phi. Substituting this value in the second of the equation, we then obtained nx phi by integration. Substituting N phi, this third value is substituted in the second. N phi here. Substituting this value of n phi is here, and by integrating we can get the value of nx phi. Now, using the value of nx phi, we can obtain the nx. Here, putting that value in this, then integrate, so we will get the nx. First, you put this value in the second, integrate, you will get nx phi. Put nx phi here, integrate, you will get the nx. So, do it yourself, you will get the equation 271 of the book. This is homework. So, we will meet on Friday. I think 2 more lectures are required, Friday and next Wednesday. One more derivation is there. कौन सा नया सर वाला? डेरिवेशन हाँ सर. ये रहा है, जूम करना भाई. The last one. ये वाला सर. Read it.
पढ़िए। Derive the following equations of equilibrium in the case of shells in the form of surface of revolution and rotate symmetrically with respect to their axis. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we'll do this. तो मैं वो पता मैंने सर आपको WhatsApp पे भेजा नहीं सर। ओके ओके फोटो मेरे को फोटो खींच दो ना हम स्क्रीनशॉट कीजिए। तुमने तो दो को पढ़ाने के लिए बोला था यार मेरी ये गुम गई है तुम लोगों की शीट, अटेंडेंस शीट जाने कहाँ रखा गई है। खैर अपना रेगुलर सब लग रहे हैं और 4 सब आ गए। 4 आ रहे हैं, पर डेट वाइज नोट रखना थोड़ा एक जना। क्या प्रदीप, डेट्स नोट रखना, डेट्स। नहीं डेट्स नोट रखो लेक्चर की। हाँ डेट्स। ओके ओके सर थैंक यू सर so we'll meet on the Wednesday, I think. Wednesday.